Hello, good morning, class 10th. In yesterday's video, we have studied about circulatory system, which includes arteries, veins, and heart and blood. Okay. Today we are going to take the heart in account, and we shall try to understand it. Actually, I try to find out many ways that how can explain you the structure of heart, but I could not find the appropriate way, so today I am going to explain in this paper chart itself, and I hope you shall understand it, right? So today we'll see about the heart. Before directly going to the heart structure, first we'll see the outline, right? So heart is without any measurement and all, I'm just outline like cartoon I'm drawing for your basic understanding, right? So heart is generally four chambered structure which is present in our chest cavity, slightly left hand side, and its size is your fist, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है. और बचपन में जितनी बड़ी मुट्ठी होती है उतनी बड़ा हार्ट होता है. Slowly when we grow, the size of heart is also increasing. Okay, so four chambers are here, two upper chambers and two lower chambers, right? From middle it is divided, septa or wall, muscular wall is present, right? So now if it is divided from this, then you can write it as right and left. So you can say right upper part, right lower part, left upper part, left lower part. But if we are being very specific, then the upper parts are called as atrium. In class 7th you studied, and lower parts are called as ventricle. So you can say now right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. So atriums are 1 and 2, ventricles are also 1 and 2, right? Okay. Some disturbances are around, construction is going on, so please don't mind it. Now the upper part of right is connected to lower part of the right, and upper part of the left is connected to the lower part of the left, right? But this and this are not connected, and this and this, they are also not connected, but these are upper and lower parts are connected. Now this part, lower part, is connected to lungs, and this part connected to lungs. Okay, this part is connected to lungs and this part also connected to lungs. Means लेफ्ट में लोअर पार्ट कनेक्ट राइट में लोअर पार्ट कनेक्टेड है लंग से, और लेफ्ट में अपर पार्ट कनेक्टेड है लंग से. क्लियर? एक्चुअली यहाँ से जो ब्लड जाता है वो लंग से प्योर होकर यहाँ आता है, सो दैट ओके. नाउ ये कनेक्टेड कैसे हैं? हाउ दे आर कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड थ्रू द valve. You know, previously also we studied like that structure. So from here if you push it will be opened, from back side it can't go. Here also valves are present. Two more places are there, like here also valves present, and now this lower part, it's connected to whole body. We'll see later on, right? So I think this you remember, this you can understand. Total 4 chambers 1 2 3 4, left 2 upper and lower, right 2 upper and lower parts are called as ventricle, upper parts are called as atrium. But all the animals do not have 4 chambered, so it is 4 chambered. It is in mammals like we, and it is in birds. Rest of the animals, means like fishes, they have 2 chambers only. Amphibians, they are also have 3 chambered. Reptiles also 3 chambered, except crocodile. You remember, I think. Okay. Now we'll move to the
um, main structure of the heart. It is also given in your book. You can draw from there or you can draw from this part itself, right? So I shall draw and you can see with me, because connection of the pipes in heart is very important, right? So पहली बात तो फुल पेज लेंगे और थोड़े लोअर पार्ट से ड्रॉ करना शुरू करें. अपर पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर our some extra drawings, right? Okay, so I'm starting from here. It's not working. थोड़ा गैप यहाँ छोड़ेंगे. देन ये बिल्कुल कनेक्ट कर देंगे आप. From here one gap you will leave. And this you can lead upside. So also you can lead upside. सेम स्ट्रक्चर्स दिस साइड, बट यहाँ थोड़ा जगह छोड़ेंगे. इतना जितना ये पाइप, एक और पाइप यहाँ पर और, ठीक है? तो पहले से ही जगह छोड़ के रखें आप, अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. ओके, ये यहाँ गैप छोड़ेंगे, यहीं से पाइप अराइज होगा एक. Okay, so one more pipe from here. ओके, ठीक है. ये यहाँ पर वेल्व्स हैं, ठीक. यहाँ इस पाइप में भी वेल्व्स हैं. Here also valves and here also valves. Okay, now you can put it more away. After some time it is divided into two halves. Okay, then आप इसका आउटलाइन बना दो. पहले तो एक पाइप यहाँ से आता है, वो बना दीजिए आप. एंड वन पाइप इज ऑल्सो कमिंग हेयर, दैट ऑल्सो यू ड्रॉ. I am drawing its outline. Draw the walls. One pipe is coming from downside also. Now what is this actually? They are not connected to lungs. These both pipe goes to lungs, already I told. And from lungs the pipes are coming back also.
from here, from the lungs, these both pipes are coming back. From this lung also, both are joined and they are opening here, right? So this is the outline of the heart. Although this is not the part of heart, this is also not the part of heart, but they will be required for understanding the working of the heart. Okay. Now थोड़ा नाम लिख देते हैं. What this is? These are lungs. ये भी लंग है, ये भी लंग है, राइट. ओके, शॉर्ट में लिखते हैं. ये आपको यहाँ से देखा होगा तो आपको पता है ये क्या है. ये राइट साइड है, ऊपर का पार्ट है राइट एट्रियम, देन इट इज राइट लेफ्ट एट्रियम, it is right ventricle and it is left ventricle, right? Okay, so this is structure. Another difference you see, this left ventricle is bigger than right ventricle. It is bigger than right ventricle. Even the walls of these walls are thick walls, big size. Ventricle is big size and walls are thick, and this ventricle is small, as well as walls are slightly less thick or thicker than this left ventricle. Okay, right. Now I am going to show you how blood is flowing, how heart is means pumping the blood, right? So if you can understand it, मान लो कि हार्ट का अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, तो वो दोनों वन बाय वन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं. ये अभी दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, अभी ये दोनों रिलैक्स हो गए, राइट? तो ऐसे होते हैं. सपोज ये हुआ रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. In this way the heart is pumping. One time upper part is contracted, lower part is relaxed. Second time upper part is relaxed, lower part is contracted, like that. And by this rhythmic contraction blood is pumped in our body. So देखते हैं कैसे कैसे pumping होती है. So first of all, the blood is coming from the lower pipe as well as our pipe, and this यही pipe यहाँ से आके connect हो गया, and they are carrying impure blood. Which blood? Impure blood. It is also impure blood. ये बॉडी के अपर पार्ट से, मतलब हेड है और ईयर है, नोज़ है, इस पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आता है, और ये हमारे लेग और बाकी जो पार्ट है उससे इम्प्योर ब्लड लेके आता है. And after that both the pipes are combined and very big vein is formed. So this is the biggest vein, is called as vena cava. Vena cava, biggest vein, right? I hope it is visible. So it is vena cava, right? Okay. Now this vena cava opens to right atrium, so I can give it as point number 1. This I can give point number 2. So here impure blood is filled in first chamber of the heart, that is right atrium. From the right atrium, these what these are? These are valves. When these valves are opened, this impure blood is reached to right ventricle. I can give it point number 3. नाउ जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये दोनों वेल्व बंद हो जाएंगे. दीज वेल्व्स आर क्लोज व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, बट दीज वेल्व्स आर ओपन. सो नाउ ब्लड इज मूविंग इनटू दिस पाइप. आपको पता ही है ये चैम्बर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एंड दिस पाइप इज कैरिंग द ब्लड टू बोथ द लंग्स, right lung and left lung. It is right lung, it is left lung. So I can give it point number 4. Okay.
When the blood reaches to lungs, you know what happens? Lungs separate CO2 and give what? O2 to blood. ब्लड को O2 मिल जाता है और CO2 लंग्स ले लेते हैं. सेम थिंग हैपेंस हियर ऑल्सो. बोथ द लंग्स आर डूइंग द सेम जॉब. CO2 is removed and O2 is added in blood. So when O2 is added and CO2 is removed, then blood becomes oxygenated. So I will show it with the red pen. आपको पता है ब्लूइश कलर होता है ना नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का. इन प्रीवियस रेस्पिरेशन ऑल्सो इज हैव सीन. सो नाउ इट इज प्योर ब्लड. ओके, from here also this sort also. So what number should I give? This was the fourth. Now I can give it point number fifth, right? Okay, now this blood reached to, now I can give point number 6. This blood is reached to left part now, left atrium. So here pure blood. When these valves are opened, this pure blood reached to left ventricle. I can give it point number 7. And when this part will contract, ऐसे होगा ना, तो ये बंद हो जाएंगे दोनों valve, but this valve is open. So the blood is moving out of the heart through this pipe. अब because it is containing pure blood, अब एक part pure blood कहाँ लेके जाएगा? upper body part में, and another will bring or carry the blood to lower body part. Upper body parts and lower body parts. And this is called as biggest artery. It was biggest vein. You see this one, vena cava, biggest vein, and it is called as aorta. Aorta or biggest artery. Clear? Okay. अब इनके कुछ नाम है ना, वो क्योंकि पूछे जाते हैं, that we'll see. Now you tell me this pipe. You see, ये पाइप में कैसा ब्लड है? इम्प्योर है ना, और कहाँ जा रहा है? लंग्स में. लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं पल्मो. पल्मो मीन्स लंग्स. So this pipe is going to lungs, and how means which type of blood it is containing? It is containing deoxygenated, means इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसको इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं. तो इसका नाम है, इस पाइप का नाम है इम्प्योर ब्लड. तो क्या होना चाहिए? वेन होना चाहिए. नो डियर, कोई भी पाइप, एनी पाइप विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को कैरी बाहर कर रहा है ना, हार्ट से दूर जा रहा है ये ब्लड. सो एनी पाइप विच इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड एज आर्टरी. और ये कहाँ जा रहा है? लंग्स में. दैट्स वाई इट्स नेम इज पल्मोनरी आर्टरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. फिर दिस पाइप, यू सी, दिस पाइप इज कंटेनिंग प्योर ब्लड. ये वाला पाइप 5th नंबर पॉइंट पे, लेकिन कहाँ जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है. सो इट्स नेम इज पल्मोनरी, बिकॉज है तो लंग से ही कनेक्टेड, सो दैट्स वाई इज पल्मोनरी, एंड इट इज वेन. So it is always confusing, pulmonary vein, why it is vein, and pulmonary artery, why it is artery. So artery and vein का जो definition है, हम यहाँ देखते हैं थोड़ा. Artery and vein. I hope it is visible, right? Okay. So artery, any pipe which is going away from heart,
इट डजेंट मीन वेदर इट इज़ हैविंग प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड. अगर वो हार्ट से दूर ब्लड को लेके जा रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज आर्टरी. एंड व्हेन एनी पाइप इट इज coming towards heart then it will be called as vein. तो अब देखो ये पाइप, ये प्योर ब्लड है इसमें, लेकिन हार्ट की तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन. एंड दिस पाइप इट इज कंटेनिंग इम्प्योर ब्लड ऑल्दो, बट बिकॉज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट सो इट इज कॉल्ड एज आर्टरी. ओके, ठीक है. तो फिर से देखते हैं. ये था पॉइंट नंबर 1. इसको भी आप पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हैं क्योंकि बोथ आर सेम. सो इम्प्योर ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, फ्रॉम द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, they are carried by the veins, and both upper vein and lower veins are connected and they form a biggest vein that is called as vena cava. Vena cava opens to right atrium, impure blood. Right atrium opens to right ventricle. Right ventricle opens to pulmonary artery. Pulmonary artery carry that impure blood for purification to both the lungs, and then both the lungs what they do, they they mix the oxygen to the blood and take out CO2. Now blood becomes pure. Here I can write, right, pure or oxygenated blood. So oxygenated blood from both the lungs through the pulmonary vein is reached to left atrium. क्लियर करते हैं इसको. लेफ्ट atrium. Left atrium opens to left ventricle through the valves, and this left ventricle opens to biggest artery, that is aorta, through the valves. Now this aorta is divided into two parts again. One part carry the blood to upper body part, another carry blood to lower body part. अब थोड़ा इसको डेस करके देखते हैं ना. The lower body part which is carrying blood to whole body, when it will go to every part of the body, you know every part of the body they are doing respiration. So क्या आएगा इसमें, everywhere CO2 is added, CO2 is added, CO2 is added, CO2 is added, and finally it is divided into very fine parts. पतला होता जाएगा बॉडी में जाकर, and they are called as कैपिलरीज. बिल्कुल फाइन पार्ट्स को कैपिलरीज बोलते हैं. फिर वो सारे कैपिलरीज आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद फिर से क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा वेन. फिर से इम्प्योर हो गया. सो अगेन इट इज़ गोइंग टू देयर. सेम थिंग हैपन्स टू दिस पाइप ऑल्सो. व्हेन इट इज़ मूविंग थ्रू द डिफरेंट upper body part, it is collecting CO2 and again coming to